Next question number C. What kind of victory will it be? It will be a victory with no survivor will, where no survivor will be left to celebrate. Such a victory will be meaningless. Means जब कोई बचेगा ही नहीं victory celebrate करने के लिए, then what is the use of this kind of war? Next question, how should the lovers of war behave? They should put on clean clothes and walk with their brothers under the tree leisurely doing nothing. जो lover हैं, जो war के lover हैं, जिनको अच्छा लगता है, उनको बोलो, just keep all these revengeful thoughts aside and try to put on the new thoughts, new form, and look towards your enemy as brother so that you can also have the feeling of safety. If the enemy is there, if the person looks like an enemy, you will not go towards that. Why? You will feel the danger. But if you know that that person is also dealing with you like brother, then this will be a safe environment. You will feel the safety, and safety is just like the shelter of the tree, right? Next stanza देखते हैं. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trucks with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of that, no, of the threatening ourselves with death. First question from this stanza, that is, what does the poet want? Poet want what should not be confused with. Now here the answer is, the poet is advocating for silence and stillness. Stillness should not be confused with inactivity. Poet कह रहे हैं कि भाई still रहो, बिना movement के रहो, silent रहो, introspect करो. ऐसा नहीं कह रहे हैं कि काम करना छोड़ दो. ठीक है. Next देखो, explain. I want no truck with death. What is the meaning? Total inactivity brings death. The poet refuses to associate it or deal with the death. Thus, he is not advocating for death. Means one death that is because of the war, where the dead bodies are loaded, and one is by doing nothing. If you are doing nothing, you are just like a dead. So poet is not advocating the ट्रक्स ऑफ डेड. मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे वॉर में इंडल्ज हैं या जो इनएक्टिव हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. तो पोइट ऐसे नहीं चाहते हैं. Next question, what do the people pursue single-mindedly? Which is the better course the poet suggests? The answer is, people pursue single-mindedly on keeping their lives moving. The poet suggests that it would be better if they give themselves rest for some time. For once they may do nothing. क्या सोचते हैं लोग? बस अब काम करने जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बस कॉम्पिटिटिव रेस में एक दूसरे को देख के. पोइट कह रहे हैं थोड़ी देर रुको, आराम दो, so that you can also have some rest. Next question, when can a huge silence do us good? A huge silence can do us a lot of good when we are disappointed at not understanding ourselves or threatening ourselves with death. कब कब काम आएगी huge silence आपकी? जब आप disappointed हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, या आपको death से डर है. When you will be silent, you can introspect, you can have the better understanding between good and bad. ठीक है, and desirable and non-desirable, and that's why you can be relaxed and happy. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. This is the last stanza. What can the earth teach us? The earth can teach us the lesson how to live on it. Means decaying of the life, beginning of the new life. What remains alive when everything seems dead? Only the earth remains alive when everything seems dead. Earth may means the new hope or the new sprout of the plants. Who is the poet? What does he want to do? The poet is Pablo Neruda and he wants to count up to 12. और आप लिख सकते हो, he wants to just give a message to be quiet for a while. Next is, what does the poet ask us to do? He asks us to keep quiet and he is counting up to 12. So in this part, we have completed all the stanzas with the question. Now move on to some short questions. ठीक है, ये भी आते हैं आपके एग्जाम में, कॉम्प्रहेंशन या ऐसे कैसे भी आ सकते हैं. इवन लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. आपको पूरा अच्छे से पोम का समझ में आना चाहिए and you will be able to write. What will counting up to 12 and keeping still help us alive? Achieve?
Counting up to 12 takes very short time. Keeping still for this brief interval of the time gives us momentary pause. Momentary is called एक पल का pause देता है that introspect and review the course of the action. It is generally observed that most of the ills and troubles of the world are caused because of a rush and hurry. Violence is caused by the anger. Keeping quiet and still will give us the necessary respite and ensure the peace. अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप रोकोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हो उससे दूसरों को ट्रबल हो रही है, वो दूसरों के लिए खतरनाक है, और यही सारे लोग कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, जिससे लोग एंग्री होते हैं. ऑब्वियसली जितनी नेगेटिव चीजें होंगी नेगेटिविटी ही स्प्रेड होगी. तो पोइट क्या बोल रहे हैं? जस्ट इंश्योर द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग क्वाइट, दिस विल इंश्योर द पीस. Next question, do you think the poet advocates total inactivity in that? No, he doesn't advocate either total inactivity or death. He makes it quite clear that stillness should not be confused with total inactivity or equated to it. Total inactivity brings death, and Neruda has no trucks with death. His stillness means that halting of the harmful and hostile human activity. वो inactive का मतलब कोई काम मत करो. अगर कोई काम नहीं करोगे तो you will be just like the dead person, और बहुत सारे लोग होंगे तो it will be just truck, loaded truck of the that person. तो वो नहीं चाहते हैं. काम करना है लेकिन हमको वो काम नहीं करना है जिससे दूसरों को हार्म हो. और स्टिलनेस से उनका मीनिंग है जो हार्मफुल एक्टिविटी हैं उन पे हॉल्ट लगाओ, एंड हॉस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स द डेंजरस, द इल मैनर्ड, इल फीलिंग वाली जो एक्टिविटीज हैं उनको रोकना है. किसको? एक्टिविटी को नहीं रोकना है. What is the sadness that the poet refers to in the poem? Man's sadness is formed out of his own actions and thoughts. कैसे आती है सैडनेस? हमको ओन थॉट्स और एक्शन से आती है. मतलब आप भी उसी एनवायरनमेंट में हो, दूसरा भी उसी एनवायरनमेंट में है, और इफ द अदर पर्सन इज फीलिंग हैप्पी एंड एंजॉयबल इन द सेम एनवायरनमेंट, तो आपको कैसे सैडनेस आ रही है? ये आपके खुद के थॉट्स से आती है. इट इज क्वाइट आयरॉनिकल दैट मैन हु अंडरस्टैंड सो मच fails to understand himself and his action. Rash action prove harmful and disastrous. Man is the creator of all disaster. He is always threatening himself with death because of his thoughts and action. This is the tragedy of his life. जब भी हम मतलब हमको ये चीज़ क्या हो रहा है? We are means we can say ना, we are feeling the ill effect, और हम ये सब झेल रहे हैं, बट ये हम समझ नहीं पाते कि इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं. जितने भी डिजास्टर होते हैं मैन ही उनको क्रिएट करता है. जो डेथ है वो बिकॉज ऑफ हिज थॉट आती है. किस तरह की? जो थ्रेटनिंग है, थ्रेटनिंग ऑफ द थॉट, वो डेथ वो आपके थॉट से ही आता है. वाई? बिकॉज देयर इज नो पीस इन योर माइंड. पीस क्यों नहीं आती है? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टू योर माइंड. ओके, यही ट्रेजेडी है लाइफ की, जो वो किसी और पे, मतलब हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, बट एक्चुअल में वी आर द कल्प्रिट. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent still? कौन से symbol हैं भाई? The poet wants to prove that there can be life under the apparent stillness. The poet invokes the earth as living symbol to prove his point. कौन सा है? जो मेन है वो अर्थ है. The earth never attains total inactivity. Nature remains at work at the time even under the apparent stillness. It keeps earth alive. This idea is beautifully illustrated by the following lines: as when everything seems dead and later proves to he alive. यहाँ पे बताया गया है जो मेन उन्होंने दिया गया है सिंबल, वो क्या सिंबल है? अर्थ. उन्होंने कहा कि अर्थ कभी भी स्टिल नहीं होती है, वो हमेशा काम करती रहती है एक नई लाइफ को बनाने के लिए, एक फ्रेशनेस बनाने के लिए. और ये बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है ये लाइन से. ये जो लाइन है ये पूरी टेक्स्ट से ली गई है, ये आप लर्न कर सकते हो एंड यू कैन राइट दिस इन योर आंसर. Now here, why does Pablo Neruda urge us to keep still? Stillness is essential for calm reflection and quiet introspection. We hear the voice of conscience in moments of silence. The poet is
convinced that the most human ills and miseries are caused by men's hurry and rush to do the things. The poet wishes that we may withdraw ourselves from undesirable action and keep still for a moment. जब आप still रहोगे, जब आप काम करना बंद करोगे, तभी आपको peaceful reflection होगा और आप अपना introspect यानी कि आप अपने अंदर को जांच सकते हो. Concise मतलब soul. जो वो moment होगा तभी आप उस soul को उस silent moment में समझ सकते हो. And this is the मीन्स पोइट ने कन्विंस कर दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जितनी भी ह्यूमन इल्स हैं या मिजरीज का मतलब होता है वरीज, जितनी भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो हरी और रश, जो हम काम करते हैं, जो भागे जा रहे हैं, बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं खुद को समझने का, उसकी वजह से होती हैं. और वो पोइट विश करते हैं कि ये सारी चीज़ों से हम अपने आप को विड्रॉ करें. ये अनडिजायरेबल एक्शन है जो दूसरों के लिए अच्छे नहीं है, उनसे हम अपने आप को विड्रॉ करें और एक मोमेंट के लिए कुछ भी ना करें. Next question, why shouldn't we speak in any language and not move our arms so much? People of the world speak in different languages. They indulge in unnecessary debates and disputes. Most of these arguments led destructive wars. The poet urges people to stop speaking in any language. They must speak through their hearts. So far, men have moved their arms only to harm others. Therefore, the poet warns that they should not move their arms so much and let these arms rest for once. Let the feeling of the mutual understanding be created among human beings. उन्होंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं और इन्हीं लैंग्वेज की वजह से आर्ग्यूमेंट और झगड़े होते हैं. आप जितना ज़्यादा बोलोगे तभी तो झगड़ा होगा, जब आप बोलोगे ही नहीं तो झगड़ा कैसे होगा? और यही डिस्ट्रक्टिव वॉर्स का जो रूट है, मतलब ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो डिबेट है, ये जो डिस्प्यूट्स हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉप स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज फॉर सम टाइम. और इससे आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को देख सकते हो कि हाँ, जो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने बिना बोले ही हमने उनको टाल दिया. आर्म नहीं उठाने का मतलब है कि यू डोंट टेक एनी एम्यूनिशन इन योर हैंड जो दूसरों को हर्ट कर सके. यानी कि ये जो आपके आर्म है, यानी कि जो ये वॉर है, जो अपने आपने हाथ उठाए हैं वॉर के लिए, उसको थोड़ी देर के लिए रोको. एंड देयर विल बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. एक दूसरे को समझने की कोशिश करो. एंड इट विल बी क्रिएटेड जस्ट बाय बीइंग having the silence and having the stillness. Pablo Neruda says, we would all be together in a sudden strangeness. When can we experience such a moment? कब कर सकते हैं हम ये? And why will that be an exotic moment? Non-stop activity, unnecessary rush and noise have made our lives unpleasant and full of misery, pain and troubles. We must stop rushing, hurrying, worrying and running. Even the noise of the engine and machine must stop for once. Then all of us will enjoy the sudden strangeness of that moment. It will be a unique moment, that an exotic or fascinating moment we shall feel totally relaxed, फिजिकली एज वेल एज मेंटली. जब क्या होगा? जब हम सारी जो हमारी अनप्लीजेंट फीलिंग्स है, जो मिजरीज है, ट्रबल है, पेन है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि हम अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं. जब हम ये सारी भाग दौड़, जल्दबाजी, चिंता, स्ट्रेस सब छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए अपनी मशीनों को, इंजनों को चलाना छोड़ देंगे, तो ये जो मोमेंट होगा उससे आपको बहुत सडन स्ट्रेंजनेस फील होगा. वो बहुत ही अलग एंड एग्जॉटिक मोमेंट होगा, जो फैसिनेटिंग मोमेंट होगा आपके लिए. एंड आप क्या उससे क्या होगा? आप रिलैक्स फील करोगे. कैसे? फिजिकली और मेंटली. जो फिजिकली और मेंटली रिलैक्स मीन्स यू आर हेल्दी, यू आर हैप्पी. What does the poet ask the fisherman and the man collecting salt to not what docs in exactly want to convey by this? What message बोल सकते हो आप यहाँ पे? ठीक है, मैसेज एंड what not. यहाँ पर आप बोल सकते हो what not. So this यहाँ पर पूछ रहे हैं फिशरमैन के एग्जाम्पल के लिए. So this question is about the example that he has given, and here it is written, this is what does the poet ask the fisherman and the man collecting salt to do. ठीक है, to do, and what this is does he exactly want to convey by this.
Pablo Neruda is against any kind of violence, and he addresses fishermen and asks them not to harm the whales living in the cold sea and the polar region, and he is also against any kind of self-torturing. The man who is gathering the salt in the hand of his hand asks this man to look after himself and take care of his injured hand. वो दोनों चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब एक जो वायलेंस है दोनों तरह से होती है, यानी कि ह्यूमन इज क्रिएटिंग वायलेंस टू द अदर पर्सन एज वेल एज टू हिमसेल्फ ऑल्सो. तो फिशरमैन स्टॉप क्रिएटिंग हार्म टू वेल्स एंड सॉल्ट गैदरिंग मैन स्टॉप हार्मिंग योर सेल्फ. ठीक है, ये बोला जा रहा है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर मेंशन टुवर्ड्स वॉर हियर. यहाँ पे कौन कौन सी वॉर किया गई बताई गई है. ग्रीन वॉर्स अगेंस्ट द एनवायरमेंट, wars with the poisonous gases, and wars with the fire must be terminated or stopped at once. What alternative does Pablo Neruda suggest instead of indulging in wars? मतलब अगर आप वॉर में नहीं हो तो आप और क्या कर सकते हो. Instead of indulging in wars, the people must come out in their best dresses with their brother. They should go out for a walk under the shady tree and enjoy themselves doing nothing. This would bring the feeling of togetherness among them. वॉर मत करो, नए नए कपड़े पहन के आओ, नए थॉट्स के साथ आओ, एंड गो फॉर अ वॉक अंडर द शेड ऑफ द ट्री. दैट विल गिव यू द रिलैक्स एंड पीसफुल फीलिंग, एंड दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग ऑल द ह्यूमन्स टुगेदर. How does the poet distinguish stillness from total inactivity? Why does Neruda say, I want no truck with death? Pablo Neruda is in favor of stillness or silence. We remain still and quiet for some time. On the other hand, total inactivity is a permanent suspension of work. It is just like death. Stillness should not be confused with total inactivity. Life goes on as usual. There can't be anything like total inactivity, and the poet refuses to associate with death or to deal with. यहाँ पे क्या बताया गया, स्टिलनेस को टोटल इनएक्टिविटी के साथ हमको कंपेयर नहीं करना है. उस स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है. टोटल इनएक्टिविटी तो बिल्कुल डेथ के समान हो जाएगी. मतलब उन्होंने बताया, साफ साफ बोला है कि टोटल इनएक्टिविटी से मतलब है इट विल बी जस्ट लाइक डेथ. और उन्होंने टोटल इनएक्टिव होने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला है रुकने के लिए, वो उस चीज़ों के लिए जो दूसरों के लिए हार्मफुल होती हैं, जो डेथ क्रिएट करती हैं. Why does the poet feel that we should not be so single-minded? People are generally single-minded. They want to focus only one thing. They want to keep their lives going. They are ever busy in their pursuit. The poet wishes that they would not be so much absorbed with always remaining on the move. They must have some respite and rest, and they too need peace or silence. Single minded सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचो. They are leading the same life at the same place with you. They too want the same respect, the love and affection. If you can give them, definitely you will have the same in return, and everywhere will be peace and silence. Why do men become sad? How can this sadness be overcome? Men fail to understand themselves. They are always threatening themselves with death. When they realize their failure to understand themselves, they become sad or helpless. Fear of death also makes them sad, and only huge silence can interrupt the sadness. Such silence will do them good. क्यों होती है सैडनेस? वो होती है सैडनेस जब वो अपने आप को अच्छे से समझ नहीं पाते, उनको क्या चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं. जब वो रिजल्ट देखते हैं तब उनको पता चलता है और वो सैड हो जाते हैं. तो अगर हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ. अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. और इंट्रोस्पेक्शन कैसे होगा? साइलेंस के थ्रू होगा, एंड साइलेंस विल डेफिनेटली डू गुड फॉर दैम. How might a huge silence interrupt the sadness of man? Men never understand themselves, nor are they ever sure of their action. They face another tragedy due to their own actions. They are threatening themselves with death, and this realization makes them helpless and sad. Only a huge or long silence might interrupt this sadness and do them some good. मतलब ये जो चीज़ है, yes, यहाँ पे पूछा गया है ह्यूज साइलेंस कैसे हेल्प कर सकती है.
कैसे इंटरप्ट कर सकती है। आप बहुत सैड हो, अगर आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे तो कैसे हेल्प होगा। जब आप साइलेंट हो जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे, आप सोचोगे कि यस ये साइलेंस, ये जो सैडनेस है किस वजह से, मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे दूसरों को दुख हुआ और फिर मुझे दुख हो रहा है। यानी कि वेन एवर यू आर डूइंग मीन्स देयर इज अ डिवाइन एंड डेविल इन मेन्स हार्ट। आप कभी भी कुछ अच्छा करो, आपको फील हो या ना हो, बट देयर इज समथिंग रिमेन। अगर आपने कुछ बुरा किया है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, आपको हमेशा एक रेस्टलेसनेस रहती है। और वही ये बताया गया है कि जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आप टाइम नहीं दोगे उस चीज़ को समझने के लिए, यू ऑलवेज फील रेस्टलेस. Under the apparent stillness, there is life. Justify this statement giving an example from the poem Keep Quiet. Naruda does not equate stillness with total inactivity. He believes that under this apparent stillness, there is life. We can learn it from the earth. When everything seems dead, the earth still remains alive. The earth is never dead. The life on the earth goes on. It's unusual under the apparent stillness. हम लोग सो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन नेचर है जो कभी भी काम करना बंद नहीं करता है, हमेशा वो अच्छे के लिए ही। एंड इट इज़ ऑलवेज लाइक नेचर, हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नेवर स्टिल, कभी कोई काम करना बंद नहीं करता, बट वो जो काम कर रहा है दैट इज़ फॉर एवरीवन, दैट इज़ फॉर द एडवांटेज एंड फॉर द लाइफ फॉर एवरीवन। तो हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ है दैट कैन बी कॉल्ड एज नेवर डेड, और ये अपरेंट स्टिलनेस है, दिस इज फॉर good for everyone. Justify the title Keeping Quiet. The title of the poem quite appropriate and logical. It suggests the necessity of quiet introspection. The people of the world are overactive and always on the move. Their activities have caused untold troubles and sufferings. Keeping quiet will do them a lot of good. It will save them from many harmful and violent activities. Moreover, it will help in reflecting over the fate man and help in creating a feeling of mutual understanding among human beings. यहाँ पे ये सारी qualities और benefits बताए हैं of being quiet. जब आप quiet रहोगे तभी आप अपने आप को समझोगे, दूसरों को समझोगे, और जो अच्छा है वही करोगे. Last question देखते हैं, which is the exotic moment that the poet refers to in keeping quiet. The poet talks about the exotic moment of everyone keeps quiet. Then there will be no rush for a second. The machines must stop for a moment, and that moment will be fascinating for all of us. And all of us enjoy the sudden strangeness of the moment together. Each and every type of question I have brought for you. So if the long question is well come in your exam, you will be ready to face that. ठीक है? So just go through the text and try to mark the poetic devices yourself more and more. These are not the limited question. Unlimited question can be asked in any manner. कोई भी indirect message. But अगर आपको poem अच्छी तरह से समझ में आ गई है, you will be able to solve any question. ठीक है? So this video I'm ending here to keep this promise that I'll bring a new video for you. Take care till then.